Negotiable Instrument Act 1881. Before getting into this law, basically this law deals with 148 sections and 17 chapters. Negotiable Instrument Act consists of 148 sections and 17 chapters. This applies on what? First of all, important thing to understand is that Negotiable Instrument Act basically ये act, why this act is there, ये है क्या चीज, ये लॉ कौन सा है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. If you see the preamble of the act, अगर आप preamble of the act को देखेंगे तब क्या बोलते हैं ये, this is the act to define and amend law relating to promissory note, bill of exchange और check. तो बेसिकली ये तीन चीजों के लिए बना हुआ है, promissory notes, bill of exchange और checks. तो बेसिकली Negotiable Instrument Act is a law which govern the enforceability or which govern the legality of three things: promissory notes, bill of exchange or checks, and nothing else. तो बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, बात को समझने की कोशिश करेंगे, इस एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कोई एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है, नॉट एन एग्जॉस्टिव लॉ. ठीक है, इट इज वन ऑफ द डायमेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ. Dimension of contractual law. So it is one of the dimension of a contractual law only, in which the contractual relationship arising out of promissory note, bill of exchange, or checks are governed. So basically, whatever a relationship exists or originates from promissory notes, bill of exchange और checks, उनको जो फंक्शन करेगा वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. फर्स्ट, ठीक है. तो बेसिकली बहुत सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, सारे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट टैकल नहीं करता है. ये कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को टैकल करता है. कौन से स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जो ये तीन हेडिंग्स के अंदर डील करते हैं, राइट? दैट इज promissory note, bill of exchange और चेक्स. 1881 का जो लॉ है उसका सबसे रिसेंट अमेंडमेंट है 2018, 1 September 2018. तो मोस्ट रिसेंटली इट वाज अमेंडेड इन 1 September 2018. As the name suggests, negotiable instrument, and therefore first question to discussion, okay, because we are preparing for judicial examination, सब जगह नहीं आता, कुछ लिमिटेड स्टेट्स में आते हैं, ठीक है. बट यस, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है in the perspective of your preparation, because you have the jurisdiction to try such matters. तो अगर आप सिविल जज जूनियर डिवीजन बनते हैं तो जितने भी नेगोशिएबल मैटर्स हैं वो ट्राइबल बाय जेएम फर्स्ट क्लास ना, बेसिकली इनकी ट्राइबलिटीज आपके पास आने वाली है, and it is necessary to understand. तो सबसे पहले let us try to understand what do you mean by the term negotiable instrument. सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करें, what is the meaning of the word negotiable instrument. The word negotiable instrument under Instrument Act, Negotiable Instrument Act, is defined under Section 13. So basically, Section 13 of the said Act
tell us what do you mean by the term negotiable instrument and what this is. Let us go and read negotiable instrument की definition under section 30. All of you have Bear Act, I think so. You have Bear Acts. जो जो लोग कैमरा को ऑन कर सकते हैं ऑन रखिए ताकि मुझे पता रहे, ठीक है, ये क्या चल रहा है. चलिए. A negotiable instrument means a promissory note. This is negotiable instrument means. Try to understand. The definition of the word negotiable instrument for the purpose of 1881 Act is exhaustive. So section 13 is exhaustive definition. So the term negotiable instrument for the said act, I am not saying generally. Other instrument can also be negotiable. But the negotiable instrument under Negotiable Instrument Act means what they're saying. The word negotiable instrument means a promissory note. This is promissory notes. Second, bill of exchange. And third is check. Payable either to order, payable either to order or to bearer. वो बात को समझेंगे. Payable, payable, payable either to order or bearer. That is a different concept. The starting of the definition is very clear that for the purpose of Negotiable Instrument Act, the word negotiable instrument basically means promissory note, bill of exchange and check. समझते हैं. देखिए वर्ड इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है. द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीन्स डॉक्यूमेंट. याद रखिए. Word instrument means document. Word negotiable means basically try to understand by which you can do, by which transactions can be done. So basically through which exchange of price or money happen. कुछ नहीं है. तो नेगोशिएबल मतलब नेगोशिएट करना. यू नो व्हाट इज नेगोशिएट करना. हम आपसे कोई चीज नेगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो अदला बदली करना, कुछ लेना कुछ दे देना. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो किसी चीज के रिटर्न में दिए गए, ठीक है. तो मैंने कुछ लिया और उसके रिटर्न में मैंने कुछ दे दिया, ठीक है. तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स जो मैंने किसी चीज के रिटर्न में दिए या किसी चीज के लियू में दिए, किसी चीज की वजह से दिए. तो in lieu of, in return of, I am giving in return of something. जब मैंने किसी चीज के रिटर्न में कुछ दे दिया, ठीक है, तो वो जो डॉक्यूमेंट मैंने किसी चीज, किसी वर्क के रिटर्न में दिया, किसी लोन के रिटर्न में दे दिया, किसी प्रॉमिस के रिटर्न में दे दिया, एनीथिंग, तो आई एम गिविंग दैट डॉक्यूमेंट इन नेगोशिएशन विद सर्टेन थिंग. So certain thing is being negotiated with me, and in this return, I am creating an instrument on that negotiation. That is not a generally negotiable instrument. Under Negotiable Instrument Act, the word negotiable instrument, that means the documents which will be considered as negotiable, the documents which will be considered as negotiable documents for the purpose of Negotiable Instrument Act are promissory notes, bill of exchange and checks. Basically what they're saying, documents. Section 13 define क्या कर रहा है? The documents which can be negotiated in said acts are promissory notes,
bill of exchange and checks. एक चीज तो क्लियर है, इन तीन के अलावा कुछ और होगा भी। ये प्रीएम्बल ने भी क्लियर कर दिया हमको, ये हमने प्रीएम्बल में भी पढ़ा है, प्रीएम्बल ने भी हमको क्लियर किया, और हमने सेक्शन 13 में भी पढ़ लिया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन तीन चीजों पे लगता है। अब इंपॉर्टेंट ये, व्हाट डू यू मीन बाय दीस टर्म्स, है ना, इन टर्म्स है क्या चीज। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दीस टर्म्स वन बाय वन। लेट अस पिक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहले डेफिनेशन, दैट इज प्रॉमिसरी नोट। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रॉमिसरी नोट? The term promissory note is defined under section 4 of Act. So what do you mean by term promissory note is been defined under section 4. So let us go and read section 4 definition, try to find out what do you mean by the term promissory note. Right. चलिए, this is promissory note is an instrument. समझिएगा, promissory note is an instrument. Instrument in writing. Basically, they are talking about document. है ना? So promissory note is what? It is like a document that must be written. अब क्या है? This is promissory note is an instrument in writing containing an unconditional undertaking. ये जो डॉक्यूमेंट है, जो ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी खासियत क्या है? This is it is a it talk about unconditional undertaking. Second important essential is this, that promissory note में there is an unconditional undertaking. Third condition, signed by the maker. It is signed by maker. Third situation, it is signed by the maker. Fourth situation, to pay a certain sum of money. Fourth is for payment of certain sum of money. For the certain sum of money. Fifth point, only to a certain person or to the bearer of the instrument. Only to certain person or bearer of the instrument. और फिफ्थ की सेकंड कंडीशन, फिफ्थ का ही पार्ट है, और to the order of a certain person or to order of certain person or bearer of instrument. समझ लेना। तो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, डॉक्यूमेंट को, किसी भी वर्ड्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉमिसरी नोट में अगर कन्वर्ट होना है तो उनको ये कंडीशन प्रूव, इट मस्ट बी अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय अंडरटेकिंग? व्हाट डू यू मीन बाय अंडरटेकिंग? अंडरटेकिंग क्या होता है? दिस इज समथिंग लाइक इट्स अ प्रॉमिस। अंडरटेकिंग इज अ प्रॉमिस। ठीक है, we cannot call it acknowledgement, but yes, it's a type of acknowledgement. But this is not acknowledgement, but it's a promise. We can call it acknowledgement in rough way, type of acknowledgement.
they are saying it is an unconditional undertaking. Unconditional मतलब without any condition. Without any condition. तो बोलते हैं एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बिना कंडीशन के, ठीक है, क्या कर रहा है, एक प्रॉमिस कर रहा है. किस टाइप की प्रॉमिस है? टाइप ऑफ द प्रॉमिस क्या है? बोलते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी. This is that the promise is for the payment of certain sum of money. This is the second ingredient. This is the undertaking must be for what? For the payment of money, firstly, and that payment of money must be certain. So this is first, there must be undertaking. So undertaking means promise. There must be promise first. Second, undertaking must be unconditional. When I say without any condition, promise is without any condition. So no prior, no subsequent condition is involved. This is third. This undertaking is for the payment of money. Undertaking is for payment of money. So this undertaking is being done for the payment of money. That is, promise is made to make payment. So somebody is making a promise that he will make a payment. ठीक है? And the payment must be, fourth situation, the money, the amount of payment must be certain. The amount promised to be paid must be certain. तो जो अमाउंट प्रॉमिस किया पे करने का, that must be a certain amount. Certain means fixed, clear, है ना? Determined. It must be fixed, clear, certain, determined amount. Right. Fifth situation, this is that undertaking must be signed. It must be signed. The person making the undertaking must sign it. The person making undertaking must sign it. He must make a signature to that undertaking. Please, to first, second and third and fourth, ये इंग्रेडिएंट समझ में आए नहीं आए, है ना? तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया. आगे क्या करते हैं? Next, this is sixth condition. This is what? This undertaking must be given to a certain person. Only to a certain person. So you must also certain to whom you are giving the undertaking. The person to whom undertaking is given. Undertaking is given. Must be certain. तो he must be fixed. तो अंडरटेकिंग जिसको कहिए वो भी एक फिक्स्ड इंडिविजुअल होना चाहिए. ठीक है? तो
तो अंडरटेकिंग इज पेमेंट ऑफ अ मनी टू अ सर्टेन पर्सन, ठीक है। अब टू अ सर्टेन पर्सन ऑन ऑर्डर, ठीक है, और ऑन बियरर, है ना। तो दे कहते हैं, दे व्हाट दिस इज, द पर्सन टू whom you have made this acknowledgement undertaking, ठीक है, the payment will be made on the order of that person or the person who bears such acknowledgement, carry such acknowledgement। इसको हम शब्दों को समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो बेसिकली ये लाइन को अच्छे से समझेंगे बाद में, बेसिक समझना है प्लीज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रॉमिसरी नोट बनेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पढ़ने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल पिक करते हैं। ए ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, दिस इज नोन एज इंस्ट्रूमेंट, दिस इज इंस्ट्रूमेंट। उसने लिखा आई प्रॉमिस टू पे 500 रुपीज, बताइए। और उसके बाद उसने क्या किया, सिग्नेचर कर दिया, दिस इज अ सिग्नेचर ऑफ ए। तो फर्स्ट एग्जांपल है, ए ने इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसपे उसने लिखा आई प्रॉमिस टू पे ₹500 और सिग्नेचर कर दिया। बताइए, इज इट अ प्रॉमिसरी नोट और नॉट? इज इट अ प्रॉमिसरी नोट? हाँ या ना, जल्दी। इज इट अ प्रॉमिसरी नोट? आंसर इज नो। व्हाई? Why is it not a promissory note? Why? Because person is not given. Because not to a certain person. Certain person. ठीक है? Let us pick up the example. Says, I promise to pay B 500 rupees. और उसके बाद सिग्नेचर कर दिया। बताइए, will this be a promissory note? Will this can be a promissory note or not? Can this be a promissory note? Answer is yes. This is. This is a promissory note. Let us pick up another exception. See, A promises, so I say A acknowledges that he is under debt of 1000 rupees, ठीक है, of B, which he will pay whenever B demands. बताइए, can this be a promissory note? Can this be a promissory note? Can this be a promissory note? Answer is yes, this is a promissory note. Why? First, it is acknowledgement of that. Secondly, it is fixed amount. Thirdly, it is to a certain person. Fourthly, B demands. तो अगर आप जो देखेंगे ना वहां पे जो ये वर्ड है, only to a certain person or to order of certain person. This word order basically means on demand. The word order basically means on demand. So they can fix that, okay, whenever such person will demand me, I will pay. Because for the promissory note, they are not saying you must fix the time zone. Sir, to be paid on certain date, ऐसा कुछ नहीं है. Date is not
date of payment, basically. Date of payment is not an essential factor. It may be there, it may not be there. Right. Suppose D. This is not a condition. Demand is not a condition, Manvendra. Demand is how demand can be a condition. This is not a condition. This is not condition. Condition is this. I am under debt of 1,000 rupees of A that I will pay. I will pay after my marriage. After my marriage. This is a case of condition. This is a case of condition. No, this is not unconditional, not no promise. This is mere acknowledgement. This is mere acknowledgement, but not promissory note. This is mere acknowledgement, not a promissory note. No, Sanjay, please. क्लियर हुआ प्लीज, क्लियर हुआ थोड़ा सा, मानवेंद्र क्लियर हुआ? यस, चलिए अब समझिएगा। तो देखिएगा, प्रॉमिसरी नोट अंडर सेक्शन 4 is not the complete definition. It's not complete definition, first of all. याद रखिएगा, तो promissory note under section 4 is only for the purpose of negotiable instrument. Right. So only for the purpose of Negotiable Instrument Act, they define the term promissory note. Right. तो इसके अलावा सेक्शन 4 की डेफिनेशन बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है। अगर आपको एग्जैक्टिव डेफिनेशन देखनी है प्रॉमिसरी नोट की, तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, तो सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट बेसिकली पूरी डेफिनेशन देता है, बट वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है, तो हमको वहाँ पढ़ना भी नहीं है। तो बेसिकली जो ये डेफिनेशन है प्रॉमिसरी नोट की, वो जस्ट एंड जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। तो देयर इज अ चांस कि जो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल डी, which might not be a promissory note for the purpose of negotiable instrument act, but it may become a promissory note if it fall under section 2 clause 2 of a stamp act. तो promissory note खुद अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, but out of that a concise definition, a limited definition just for the purpose of negotiation. तो promissory note बहुत कुछ हो सकता है, but अगर promissory note को negotiation करना है, promissory note को as a form of negotiation use करना है under negotiable instrument act. So if you are using a promissory note as a negotiable instrument, then these conditions must be fulfilled. Try to understand. समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि promissory note बहुत कुछ हो सकता है, but उन बहुत कुछ में से वो promissory note जिनको आप as a negotiable instruments use कर सकते हो under negotiable instrument act, they must fulfill these conditions. कौन कौन सी? Firstly, that they must be written. Secondly, they must be signed. Thirdly, they must talk about certain amount. Now, fourthly, they must talk about unconditional undertaking. Fifthly, they must talk about a certain person. Now, if these conditions are fulfilled, it will come into the definition of promissory notes. Right. चलिए, तो these are promissory notes. Second, हमारा क्या था? Second is bill of exchange. Second definition is a
Bill of exchange. Let us go with second definition of bill of exchange. चलिए Section 5 defines bill of exchange. So this is what bill of exchange will turn into a negotiable instrument. So Section 5 will tell us what type of bill of exchange will be considered as negotiable instruments. Right. So let us see bill of exchange. A bill of exchange is an instrument. So again, it's an instrument. First thing is a instrument in writing. So we know this again. What do you mean by instrument in writing? Last section तो वैसा same. It must be documented form, है ना? So bill of exchange is an instrument in writing. First, second, containing an unconditional order. Unconditional order. This is the difference. Promissory note में क्या था? Unconditional undertaking. So basically, in bill of exchange, the payee, or I will say the person who is making a bill of exchange, is not promising to make the payment. Under bill of exchange, what is important is it is an unconditional order. That means the person making bill of exchange is ordering third party, ठीक है? So it is an unconditional order making third party to make payment, unconditional. तो बिल ऑफ एक्सचेंज की खासियत क्या है? तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 लोग होने वाले हैं, पढ़ेंगे अभी। बिल ऑफ एक्सचेंज को हम समझेंगे। तो प्रॉमिसरी नोट में नॉर्मली 2 पीपल होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इंवॉल्व होने वाली है। आगे पढ़ते हैं। दिस इज bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker. Third, signed by maker. कोई प्रॉब्लम? You know what do you mean by signed by maker? Last class में जो अभी लास्ट सेक्शन में जो पढ़ाया, जो बना रहा है वो खुद के साइन करेगा, ठीक है? Directing certain person. Fourth, the instrument is like a direction. Is like a direction to certain person. It's like a direction to a certain person to pay certain sum. Fifth, to pay certain sum of money. तो बेसिकली समझ लेना, बाकी एक लाइन बाद में पढ़ेंगे। इन 4-5 चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली वो क्या बोल रहे हैं? एक डॉक्यूमेंट है जो ए लिख रहा है। वो क्या लिख रहा है? प्लीज मेक पेमेंट टू मिस्टर एक्स ₹1000, ठीक है? प्लीज बी, लेट इट बी। तो बी को बोल रहे हैं प्लीज बी मेक पेमेंट टू मिस्टर एक्स ₹1000, उस पर साइन कर रहे हैं। और ये किसको दे रहा है? गिविंग टू एक्स। और एक्स क्या कर रहा है? एक्स ले जाकर इसको किसे दे रहा है? बी को। तो बेसिकली दिस इज क्या? दिस इज अ डायरेक्शन गिवन टू बी, है ना? और बी रिसीविंग ऑन दिस डायरेक्शन क्या करेगा?
B without any condition. B without any condition makes payment to Mr. X. बिना किसी कंडीशन के मिस्टर एक्स को क्या कर देगा? पेमेंट कर देगा. अगर ऐसी बात है तो दिस इज क्या? दिस इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज. दिस इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज. For example, Mr. A goes to Mr. B, a businessman, for payment of his work. तो मिस्टर ए क्या गया? बी के पास गए कि मैंने जो आपका काम किया उसका पेमेंट मुझे कर दीजिए, है ना. मिस्टर बी ने क्या किया? राइट अ नोट टू हिज अकाउंटेंट. उसने अपने अकाउंटेंट को क्या लिखा? नोट लिखा. क्या? प्लीज मेक पेमेंट of 10,000. ठीक है, 10,000 टू मिस्टर ए और पर्सन हैविंग हिज ऑर्डर, यानी कि जिसके पास ये स्लिप हो, है ना, या उसको जिसने मिस्टर ए को दे दिया. व्हाट इज दिस? दिस इज नोन एज बिल ऑफ एक्सचेंज. बिल ऑफ एक्सचेंज. तो इसको ही तो हुंडी बोलते हैं. दिस इज नोन एज हुंडी. सुना है कभी ये वर्ड? हुंडी इज अ वर्ड, लोकल में यूज होता है. ठीक है, कच्ची चिट्ठी मिलती है लिखी हुई, हुंडी. इट्स अ बिजनेस ट्रांजेक्शन. इसी को ड्राफ्ट, कभी ड्राफ्ट वर्ड तो सुना होगा ना, बैंक ड्राफ्ट्स. तो बैंक ड्राफ्ट्स आर व्हाट? दे आर बिल ऑफ एक्सचेंज. ऑल बैंक ड्राफ्ट्स आर बिल ऑफ एक्सचेंज. क्यों? आप जाते हो, बैंक एक स्लिप देता है, उस पर लिखता है whosoever have this check प्लीज मेक पेमेंट टू हिम, हाँ या ना. और आपने ड्राफ्ट लाके मुझे दे दिया, मैं जाके अपने अकाउंट में लगाऊंगा और मेरे को सिर्फ उस चेक के बेसिस पे बैंक विल पे. यही तो होता है. दीज आर द ड्राफ्ट्स. ठीक है, तो यही तो होता है. जैसे पंजाब नेशनल बैंक का ड्राफ्ट है तो क्या होगा? तो उस पर लिखा होगा प्लीज पे टू जिया जुडिशियल, है ना. एंड व्हाट आई विल गो टू पंजाब नेशनल बैंक एंड पुट देयर एंड दे विल से ओके पे टू जिया जुडिशियल्स, और वो मेरे अकाउंट में क्या डाल देंगे? पैसे डाल देंगे विदाउट आस्किंग मी एनी क्वेश्चन, हाँ या ना. दिस इज ड्राफ्ट. तो बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज आप क्या है? उसमें तीन पार्टी. तो प्रोमिसरी नोट में मैं खुद बाउंड हो रहा हूँ, मैं खुद भी कह रहा हूँ कि प्लीज ट्रांसफर कर दीजिए, मैं खुद दूंगा आपको. बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या कर रहा हूँ? आई एम ऑर्डरिंग, आई एम डायरेक्टिंग समवन दैट यू गिव द पेमेंट, बिकॉज या तो वो मेरा मुंशी है या मैंने उसके पास कुछ रखा हुआ है पेमेंट करने के लिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल चेक इज ऑल्सो बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना. बट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में क्या डिफरेंस है उसे समझेंगे. बट बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ टाइप ऑफ चेक. ओ, चेक इज अ टाइप ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो. डोंट वरी अबाउट. एक माइनर सा डिफरेंस आने वाला है, बाकी कुछ नहीं है. तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर हमेशा एक पार्टी होगी जो किसी और पार्टी को ऑर्डर देगी, और वो पार्टी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को क्या देगी? पेमेंट. तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में है, पर पेमेंट का प्रोसेस कहाँ से आ रहा है? पेमेंट का प्रोसेस थर्ड पार्टी के थ्रू है, बट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ये है ना. अगर ऐसी सिचुएशन है, इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज. इट्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज. इज इट क्लियर? बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है ये, बस ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को समझने के लिए टर्म्स बहुत प्रॉब्लम करती है सब लोग. अभी क्लियर हुआ प्लीज? थर्ड डेफिनेशन,
That is, what do you mean by the term check? The term check is defined under section 6. Section 6 define the term check. So this is, let us see the opening definition. Check is a bill of exchange. तो मैंने आपको बताया था checks are what? They are bill of exchange. No, तो checks are bill of exchange. कोई problem किसी को? So all checks are bill of exchange. But then why they are different? देखिए, drawn on a specified banker. So basically, bill of exchange that are drawn on a banker are known as bill of exchange drawn on a specified banker are known as check. check. इसकी आगे भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, बट पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं. इसके दो पार्ट हैं, लेटर पार्ट पढ़ेंगे. तो बेसिकली जो हमारा ए था और ये सी था, इसका जो पेमेंट करने वाला बीच में था, वो अगर बैंक है या फिर मैं बोलूँगा बैंकर है, क्योंकि बैंकर की डेफिनेशन भी बहुत बड़ी है. इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर, वो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर, द वर्ड बैंकर डज नॉट मीन ओनली बैंक, इट कैन बी अ पर्सन आल्सो. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बैंकर. ठीक है, वो हम उसको भी पढ़ेंगे, सेक्शन 3 में डिफाइन किया है, डोंट वरी. तो दिस इज, अगर इस तरीके का पेमेंट जो अभी हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बोला, वो तो सेम पैटर्न है, बट ये जो पार्टी है जो पेमेंट कर रही है या जिसको ऑर्डर किया जा रहा है, जिसको डायरेक्शन किया जा रहा है, वो कौन है? वो एक बैंकर है, स्पेसिफाइड. तो वहां पे सर्टेन पर्सन की जगह कौन आ गया? स्पेसिफाइड बैंकर. फर्स्ट वेयर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज देयर इज अ सर्टेन पर्सन. दिस सर्टेन पर्सन कौन भी? X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, X, Y, कुछ भी, it can be anyone. But in check, he will always be a specified banker, as BI, PNB, right? Axis, any banker or some private banker. But it must be specified. It must be clear. That's why you have check of a specific bank. No? This is. The first condition is this: those bill of exchange which are directed or to be drawn by the banker, they will be turned into checks. पहली condition. Second condition क्या होगी? देखिए, bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable, then on demand. Second condition, देखिए, अगर आप bill of exchange देखेंगे तो बोलने लिखेंगे ऑन ऑर्डर और डिमांड. अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज में देखेंगे तो वहां पे दो वर्ड का यूज किया गया है, ऑन ऑर्डर और डिमांड. whereas in check there is no concept of order, there is always concept of demand. That is always payable on, always payable on demand. तो जिसके पास वो चेक होगा वो खुद जाएगा जमा करने, तभी वो डिमांड करेगा, तभी पेमेंट मिलेगा. whereas in normal bill of exchange, डिमांड करे बिना मैं फोन करके मैं खाली लिख के भेज दूंगा, तभी भी हो जाएगा, है ना? तो मैं खाली लिख के भेज दूंगा, पेमेंट आ जाएगा. बट इन चेक इट विल ऑलवेज गो इन अ फॉर्म ऑफ डिमांड. दैट पर्सन मस्ट हैव टू डिमांड. ठीक है, तो चेक की खासियत क्या है? दो खासियत है. फर्स्टली इट मस्ट बी स्पेसिफिक, ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफिक बैंकर. सेकेंडली इट मस्ट बी ऑलवेज बी नेगोशिएटेड ओनली ऑन डिमांड, विदाउट डिमांड नेगोशिएटेड. तो यू हैव टू मेक अ डिमांड. तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो किसी बैंकर पे इशू किए गए और वो पेबल है जब वो डिमांड की जाएंगे. व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? जब आप उन्हें जाकर सबमिट करोगे, उससे पहले उनको कभी भी एक्शन में नहीं दिया जाएगा, तभी वो चेक आएंगे. अदरवाइज दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज चेक्स. ठीक, आगे डेफिनेशन को पढ़ लेता हूँ एक बार. इट इंक्लूड्स the electronic image of truncated checks and the checks in electronic form. This is added by Information Technology Act. ठीक है, तो जो ऑनलाइन चेक्स हैं, जो ई चेक्स हैं, वो वैलिड चेक है बेसिकली, और कुछ भी नहीं है. तो ट्रंकुलेटेड चेक्स क्या होता है? जो
ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स होते हैं और जिन इंडिविजुअल्स को बैंक के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स ऑफ चेक इशू किए गए हैं वो भी वैलिड माने जाते हैं। तो हम लोगों के पास नहीं है, बट ठीक है, अदर जो बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनमें इस टाइप के चेक्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारे लिए वो क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन नहीं है राइट नाउ। हमको 3 टर्म्स समझ में आई होंगी। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब समझ में आया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब सेक्शन 13 के अंदर बोलते हैं 3 चीजें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो सकती है, एक प्रॉमिसरी नोट, एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। हमको प्रॉमिसरी नोट में समझ में आया दिस इज बेसिकली अंडरटेकिंग, है ना, दिस इज बेसिकली अंडरटेकिंग। दीज बोथ आर व्हाट ऑर्डर्स, ठीक है। ये अंडरटेकिंग है स्पेसिफाइड पर्सन को, ये अंडरटेकिंग है स्पेसिफाइड पर्सन को, है ना। वेयर एज ये वाली जो अंडरटेकिंग है, ये जो ऑर्डर है ये किसको है, स्पेसिफाइड बैंक को, स्पेसिफाइड बैंक। नेक्स्ट ये पेएबल है व्हाट ऑर्डर और डिमांड पे, ये भी पेएबल है ऑर्डर और डिमांड, बट ये पेएबल है सिर्फ डिमांड, राइट। और सारी चीजों में क्या होना चाहिए, सर्टेन अमाउंट। तो बेसिकली ऑल checks are bill of exchange, but all bill of exchange are not check. तो फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट पढ़ेंगे हम, ठीक है। बैंकर्स नोट, ऐसे बहुत सारे हैं। वन इज बैंकर्स नोट्स है, you'll understand what do you mean by banker notes, या बैंकर्स ड्राफ्ट, बैंकर्स ड्राफ्ट, what do you mean by term बैंकर्स ड्राफ्ट, what do you mean by terms डिमांड ड्राफ्ट, है ना। तो whether demand drafts fall into the definition of checks or not, ठीक है, we'll understand that। उसका इफेक्ट क्या होगा उसके सबको धीरे धीरे हम पढ़ जाएंगे, बट अभी we have tried to understand the meaning of section 13, what do you mean by term negotiable instrument। So how many people have understand a term negotiable instrument? ठीक है, चलिए अभी सेक्शन 13 कंप्लीट नहीं किया। क्लॉज 1 we have done, लेटर पार्ट ऑफ सेक्शन 13 एक्सप्लेनेशन है और क्लॉज 2 है, ठीक है। ये मैं आपको कॉल करूँगा, 1 घंटे की क्लास लूंगा रोज, ठीक है। और नेगोशिएबल और इवनिंग में तो चली रही है क्लास, मॉर्निंग में तो चली रही है क्लास।